Hello, my dear students. Myself, Kinshuk sir, your KC sir, and I welcome you all to your very own beautiful channel of Magical Physics. Dear students, for 12th standard, we are bringing quick revision sessions. Here in quick revision sessions, we will quickly discuss the most frequently asked questions from board's point of view. So these quick revision sessions will be for 12th standard students. Thank you very much, dear students, for your immense support. Keep on sharing the channel so that more and more students will be benefited from it. So let's get started. So the topic, students, is electric potential and potential energy. Electric potential and potential energy. So we will consider that we have a positive charge Q and that charge is fixed at some point in space. हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, this one, and the charge is fixed. The charge is fixed at some point in space. Okay. तो कैसा है ना dear students, ये चार्ज के चारों तरफ in the entire region of this charge एक field develop हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं electric field. Charge always develops an electric field in its neighboring region, right? And this electric field के अंदर अगर बाहर से कोई charge आया, then that charge will be either repelled or it will be attracted, depending on कि बाहर से आने वाला charge positive charge है, कि like charge है, कि negative charge है. Say like charges repel, unlike charge attract. So मान लो we have a very small charge, say a test charge, and that test charge is positive. आपका जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है. तो जब आपका टेस्ट चार्ज ये बाहर से आ रहा है, तो राइट नाउ द टेस्ट चार्ज इज आउटसाइड द फील्ड, ये फील्ड के बाहर है, तो टेस्ट चार्ज पे किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. सो वी से दैट द टेस्ट चार्ज राइट नाउ इज एट इंफिनिटी. ये बस बोलने का तरीका है, दैट द टेस्ट चार्ज इज एट इंफिनिटी. सो व्हेन वी से दैट द टेस्ट चार्ज इज एट इंफिनिटी, then precisely I want to mean that test charge electric field के बाहर है. कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? कैपिटल क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है. कौन? टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज पे कैपिटल क्यू के वजह से फोर्स नहीं लगेगा. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, द मोमेंट दिस टेस्ट चार्ज enters the field, the moment the test charge enters the field, टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैपिटल क्यू will start to repel. Capital Q will start to repel. So the test charge will experience a repulsive force. So the test charge will experience a force in outward direction. The test charge will experience a repulsive force. तो अगर हम लोग इस repulsive force के against टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे रखे, we want that the test charge should be present at a point against the direction of the force, क्योंकि फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज wants to go out. So if we forcefully wish that the test charge should stay at some point inside the electric field, तो स्टूडेंट्स हमें उस टेस्ट चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा. We will have to do work on the test charge. So can I say that work needs to be done to bring a test charge from infinity to a point inside an electric field? Focus. Work करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए, क्योंकि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहना चाहता ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलना चाहता है टेस्ट चार्ज. सो वी हैव टू डू वर्क टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट inside the electric field. Now this work done by an external agent, किसी ने तो किया वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ताकि टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए. So this work done by an external agent to bring the test charge from infinity to the electric field. This work done, dear students, टेस्ट चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा as potential energy. टेस्ट चार्ज के अंदर यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी.
So when we bring a test charge from infinity to a point inside the electric field, work needs to be done in order to overcome the repulsive electrostatic force. Repulsive electrostatic force को overcome करने के लिए work needs to be done, and this work done will be stored within the test charge in the form of potential energy. Understood? तो ये potential energy का मतलब है. Now students, मान लो, imagine that this test charge is of value 1 coulomb. मतलब हमारा test charge unit charge है. Unit charge. We have fixed the value of the test charge, and we are telling that the test charge is of value 1 coulomb. तो 1 coulomb पे हमें जो वर्क करना पड़ेगा, यूनिट टेस्ट चार्ज पे हमें जो वर्क करना पड़ेगा ताकि हमारा टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर आ जाए, that work done is called as potential यानी V. So what is potential? Potential is defined as work done per unit test charge. Test charge के वैल्यू से डिवाइड कर दो, so you get 1. So for unit test charge, for one test charge, whatever work needs to be done to bring a unit test charge, आप Q naught की जगह पे 1 डाल दो. Q naught की जगह पे अगर तुमने 1 डाल दिया, then your V is equals to W. यानी potential is the work done to bring a unit test charge from infinity to a point inside the field. मतलब देखने को जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी is simply the work done. Potential energy is simply the work done. Work done to bring any charge from infinity to a point inside the electric field. लेकिन अगर डियर स्टूडेंट्स यही चार्ज का वैल्यू 1 कूलम का हो जाए, if the value of this charge becomes 1 coulomb, then 1 coulomb के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए whatever work is to be done, that work done is called as potential. So potential होने के लिए जो टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से ला रहे, that test charge का वैल्यू should be of 1 coulomb वैल्यू. अगर 1 coulomb के टेस्ट चार्ज को हमने फील्ड में लाया, so whatever work needs to be done, that is potential. So potential V is the work done to bring a unit test charge. Unit test charge को फील्ड में लाने के लिए whatever work is to be done, that work done is called as potential. Unit test charge को फील्ड में लाने के लिए the work done is potential. अब अगर मेरे को यूनिट चार्ज को फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा ये मालूम रहे, तो किसी भी रैंडम चार्ज को फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, that we can easily calculate. Yes or no? मतलब फॉर एग्जांपल I say that unit test charge को फील्ड में लाने के लिए, to bring a unit test charge into the field, the work done is maybe 3. Work done is maybe 3 unit test charge को. तो unit test charge को फील्ड में लाने के लिए work done is 3. तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ऐसे 5 चार्ज को ला रहा हूं फील्ड में, so what is the work done? You will say that the work done will be this 3 multiplied by 5. क्योंकि 5 चार्ज मैंने लाया फील्ड में, यूनिट का वैल्यू मालूम रहेगा, तो कितने भी वैल्यूज हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि 15 चार्ज मैंने फील्ड में लाया फ्रॉम इंफिनिटी, 15 चार्ज लाया, तो अगर 15 चार्ज मैंने फील्ड में लाया फ्रॉम इंफिनिटी, देन विल से दैट द वर्क डन विल बी 15 into 3. Understood? So now let's generalize it. Instead of 3 इसको हम बोलते हैं V. यूनिट चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन दैट इज V. एंड मान लो मैं ऐसा 15 के बजाय मैं बोल रहा Q चार्जेस को फील्ड में लाया, Q चार्जेस को फील्ड में लाया, तो अगर मैंने Q चार्ज फील्ड में लाया, देन वर्क डन इज QV. वर्क डन इज दैट इज W. वर्क डन इज QV. तो अगर QV is W, then my dear students, do you understand V will be W by Q. V will be W by Q. So moral of the story, फिर से हम लोग बोलेंगे, अगर 1 यूनिट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड में ला रहे, तो इंफिनिटी से फील्ड में यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल. पोटेंशियल यानी V. लेकिन किसी भी रैंडम
वैल्यू के चार्ज को इंफिनिटी से अगर फील्ड में ला रहे, देन वट एवर द वर्क इज डन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. Cool. Very good. So, pay attention. Consider a positive charge capital Q is at some point in space. For bringing any other positive charge close to it, इस कैपिटल Q के नजदीक, मतलब इस कैपिटल Q के फील्ड के पास अगर किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हमको लाना पड़ेगा, then work needs to be done. We have to do work. तो ये हमारा टेस्ट चार्ज है स्मॉल q, एंड ये स्मॉल q को हम कैपिटल Q के नजदीक लाना चाहते हैं, जस्ट लाइक दिस. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्मॉल q कैपिटल Q के नजदीक आए, देन वर्क नीड्स टू बी डन. इसी वर्क को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. इसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर ये टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 कूलम का हो जाए, मतलब यूनिट टेस्ट चार्ज हो जाए, देन वर्क डन विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल. तभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे, तभी क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे. कभी बोलेंगे अगर जिस टेस्ट चार्ज को तुमने फील्ड में लाए उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू है यूनिटी. इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड, वर्क डन इज पोटेंशियल. बट टू ब्रिंग एनी रैंडम चार्ज, वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी. सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन, एंड पोटेंशियल यानी वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज. तो वर्क अपॉन चार्ज. तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए फील्ड में जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल, एंड किसी भी चार्ज को फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. राइट, वेरी गुड. सो लेट्स प्रोसीड. So this work done against the electrostatic force is equal to potential energy of the system. अब हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोला स्टूडेंट्स? क्योंकि हमको एक रैंडम टेस्ट चार्ज बोला गया था. ऐसा बोला नहीं था कि दिस इज अ यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसा बोला नहीं था. राइट. तो क्योंकि हमको ये बोला नहीं गया कि दिस इज अ यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज ऐसा बोला नहीं गया. They are not telling that it is a unit test charge, unit 1 ऐसा बोला नहीं है. So we are telling that it is potential energy. But if it was mentioned this test charge is of unity, then it would have been potential. ठीक है. So the work done to bring any charge to a point inside the field, that work done is potential energy. ठीक है. But work done to bring a unit test charge is called as potential. Right? Very good. So we have to obtain expression for potential energy. Obtain expression for potential energy. So can you look at this figure? ये हमारा मेन चार्ज है कैपिटल Q, जिसने अपने आजू बाजू में फील्ड बनाया, उसने अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है. And this is the test charge Q naught, and इस test charge को हमें इस field के अंदर लेके आना है. So maybe we have to bring this test charge up to point B. So at point B, what will be the value for potential and what will be the value for potential energy? ये हमको find out करना है at point B. So point B पे we will find the value for potential. Potential मतलब V. Potential at point B. So we are considering that we have a charge, capital Q, and this charge is at point 2. The charge is at point 2. हमारे पास एक और चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q naught, जिसको हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं नियर दिस कैपिटल Q चार्ज. तो ये टेस्ट चार्ज को यानी Q naught को इंफिनिटी से कैपिटल Q के पास लेके आने के लिए we will have to do some amount of work to bring this test charge near capital Q. This work done is potential energy. Work done to bring a test charge near capital Q. That work done students is potential energy. And अगर हम लोगों ने इस potential energy को, इस work को Q naught से divide किया, we divide it with Q naught, यानी टेस्ट चार्ज के वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना वर्क वो मिल जाएगा.
यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल. सो पोटेंशियल V विल बी वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज. सो ये इंट्रोडक्टरी चीज है तो हमको मालूम है. लेट्स ट्राई टू ऑब्टेन दिस. सबसे पहले स्टूडेंट्स लेट्स इमेजिन कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है दैट इज एट एनी रैंडम मोमेंट हियर. हमारा टेस्ट चार्ज इधर है, यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज है, दैट इज Q0. तो हमारा ये जो टेस्ट चार्ज है ना स्टूडेंट्स, यानी Q0, वो हमारे कैपिटल Q से हमारा टेस्ट चार्ज Q0 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x. हमारा टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम कैपिटल Q इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x. x के डिस्टेंस पर है Q0 कैपिटल Q से. तो इस Q0 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट ऑन Q0. तो अगर Q0 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Q0 पे लगेगा F that will be equal to, according to Coulomb's law, 1/4 pi epsilon naught. तो मैं 1/4 pi epsilon naught को K बोल रहा हूँ. So 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2. तो Q1 is capital Q, Q2 is Q0. So 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon distance square. So distance square is x square. Distance square is x square. So the electrostatic force which will act on Q0 will be 1/4 pi epsilon naught, that is K, Q1 Q2 by R square. That is capital Q Q0 by x square, because we are considering that Q0 का distance capital Q से x है. Okay. So we can say that the electrostatic force acting on Q0 is, the electrostatic force which will act on Q0 is, according to Coulomb's law, we can say that it is F is equals to 1/4 pi epsilon naught, that is K, Q1 Q2, so that is capital Q into Q0 divided by x square, right? So this is the force acting on the test charge when it is at a distance of x from capital Q. Okay. Now what will be the direction of this force? Try to understand what will be the direction of this force. तो ये जो फोर्स है ना स्टूडेंट्स, ये तो रिपल्सिव फोर्स है. दिस इज अ रिपल्सिव फोर्स. तो हमारे Q0 पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द राइट. द फोर्स विल बी टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है. कैपिटल Q Q0 को रिपेल करेगा, सो इट्स अ रिपल्सिव फोर्स विच विल एक्ट टुवर्ड्स द राइट. जबरदस्ती अगर हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया, सो वी आर डिस्प्लेसिंग द टेस्ट चार्ज against the direction of the force. So if we displace the test charge against the direction of force, force के opposite direction पे अगर हमने test charge को displace किया, then work needs to be done. And जो work हम लोग करेंगे that will be a small work, यानी dW, क्योंकि displacement छोटा है ना, so that is dW. So what is dW? dW is the work done to displace the test charge against the direction of that force. Force तो चाहता है test charge दूर चला जाए, पर जबरदस्ती हमने टेस्ट चार्ज को कैपिटल Q के करीब लेके आ रहे. So we can say that dW is work done to displace the test charge. Test charge यानी very small charge. So work done to displace the test charge against the direction of force is. The work that is to be done to displace the test charge against the direction of the force, that work done is equal to, work is force into displacement, so force is F bar dot displacement is dx bar. So we are displacing the test charge against the direction of the force. तो ये डॉट प्रोडक्ट को अब हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखते हैं. डॉट मतलब cos theta students. So we can say that work done dW will be equal to F into dx into cos of theta. So angle between force and displacement के बीच में angle is 180 degree. So it is F dx cos 180. F dx cos 180. So we can say that dW is equals to F into dx into cos of 180.
Now cos 180 is minus 1, cos 180 minus 1. So we can say that work done, matlab dW will be equal to minus F into dx. Minus F into dx. This is the work done to cause the displacement of dx. Now my dear students, छोटा सा displacement dx का करने के लिए work done is dW. तो entire displacement अगर मेरे को q naught को करना है, so that q naught comes to point B, तो ये entire displacement करने के लिए total work done हम integration से निकाल सकते हैं. We can find it using integration. So we can say that W means the total work that is to be done. That total work done, W of total work that is to be done to cause the entire displacement of the charge will be integration of dW, and dW, students, is minus f dx. So it is integration of minus f into dx. Integration of minus f into dx. And integration हम लोग कहां से कहां करेंगे? Integration हमको करना है from point A to point B. तो point A पे, dear students, look at the figure. जब आपका टेस्ट चार्ज point A पे था, तो what was the value for x? X was R1. And point B पे, जब आपका टेस्ट चार्ज B पे आया, what is the value of x? X is R2. So can I say that the limits will be from x का value as R1 to x का value as R2. So R1 से R2 का integration. That is the total work done. So now let's solve it. So we can say that the total work done means W will be equal to integration from R1 to R2 minus of, let's take minus out, minus बाहर ले लिया, F को substitute, 1 by 4 pi epsilon naught, that is K, Q1 Q2 upon x square into dx. Upon x square into dx. My dear students, we can take the constants out. So K, capital Q, Q naught बाहर जाएगा. So we'll get the total work done. मतलब W will be equal to minus K into capital Q into Q naught. And it is integration of R1 to R2 1 by x square dx. 1 by x square dx. Right. So 1 by x square dx का integration is minus 1 by x. 1 by x square dx का integration is minus 1 by x. So minus 1 by x within the limits of R1 to R2. Within the limits of R1 to R2. बाहर क्या है? तो minus K capital Q Q naught. Minus K capital Q Q naught. And that is equal to यहाँ पे W. Dear students, ये minus and bracket के अंदर का minus plus हो जाएगा, right? So we should get W is equals to plus minus minus plus हो गया. So it is K into capital Q into Q naught into bracket के अंदर 1 by x. And limits क्या है x का? R1 to R2. Limits is R1 to R2. So we can say that it is upper limit substitution minus lower limit substitution. Upper limit substitution minus lower limit substitution. So we can say that it is K capital Q Q naught upper limit substitution, that is 1 by R2 minus lower limit substitution, that is 1 by R1. Upper limit minus lower limit. ऐसा आ गया जहां पे R2 क्या है? फाइनल डिस्टेंस, जहां पे तुम्हारा टेस्ट चार्ज आया कैपिटल Q से, एंड R1 क्या है? जहां से आया. So it is initial and final points, उनका difference 1 by R2 minus 1 by R1. Now every one of us know that this work done will be stored as potential energy. So potential energy means the work done will be equal to K, that is 1 by 4 pi epsilon naught, capital Q Q naught, bracket के अंदर 1 by R2 minus 1 by R1. So it is 1 by R2 minus 1 by R1. Right. Very good. So this becomes the expression for potential energy.
This becomes the expression for potential energy for bringing a test charge from distance of r1 to distance of r2. r1 के distance से r2 के distance पे लाने के लिए the work done is the potential energy. Now students, this potential energy को अगर हम लोगों ने Q0 से डिवाइड किया, so we get work done per unit test charge. Work done per unit test charge means potential energy divided by Q0. If we take this Q0 to the left, तो Q0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो potential energy per Q0. Potential energy यानी work divided by Q0. So that will be equal to potential difference. Potential का difference यानी delta V. So work done, potential energy के जगह पे W divided by Q0 is delta V, and delta V students मतलब potential difference will become equal to क्या बचेगा? K capital Q 1 by R2 minus 1 by R1. 1 by R2 minus 1 by R1. So ये आपका potential difference है, यानी point A का and point B का potential difference है. This is not potential of one point. This is the potential difference. Delta लिखा है, delta. ये हमारा potential difference है between the 2 points. मतलब actually में वास्तविकता में we can say that delta V is nothing but final minus initial. So final is point B. So V of B minus initial is V of A. So it is V of B minus V of A. The potential difference that is equal to क्या हो जाएगा? K into Q and bracket के अंदर क्या है? So 1 by R2 minus 1 by R1. 1 by R2 minus 1 by R1. तो यहां से students what you understand? यहां से you understand that अगर ये KQ अंदर जाता है, if KQ goes inside, तो तुमको ना क्या मिलेगा? See, V of B minus V of A will be equal to students KQ bracket के अंदर, तो दोनों से multiply, so you will get KQ upon R2 minus KQ upon R1. KQ upon R2 upon KQ upon R1. KQ upon R2 minus KQ upon R1. तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि VB का वैल्यू है KQ upon R2, राइट. फिर एक माइनस आया, उधर एक माइनस है, एंड देन V of A का वैल्यू है KQ upon R1. मतलब इन जनरल अगर मेरे को पोटेंशियल यानी V के बारे में सोचना है, इन जनरल V का फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ by R. That is the formula for potential of any point at a distance of R from capital Q. मतलब अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल Q है, यहाँ पे कैपिटल Q है, तो इस कैपिटल Q से स्मॉल r के डिस्टेंस पर, फ्रॉम दिस कैपिटल Q एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r के डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? सो पोटेंशियल होगा ये जो ऊपर लिखा KQ by R. That is the potential. And अगर इसी पोटेंशियल को हमने स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दिया, if you multiply this potential with small q क्या? बाहर से आने वाला टेस्ट चार्ज, बाहर से आने वाला जो टेस्ट चार्ज है, that is small q. तो अगर स्मॉल q से पोटेंशियल मल्टीप्लाई हो जाए, then you get potential energy, right? So this was the expression for potential, and this is the expression for potential energy. So potential energy is nothing but the work done to bring a test charge. And अगर आप टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे हो, ये भी सोच लो, if you are bringing a test charge from infinity, तो अगर आपका Q0 इंफिनिटी से आ रहा है, तो आपका R1 इंफिनिटी हो जाएगा. If the test charge is coming from infinity, then R1 will be infinity. तो अगर R1 infinity हुआ, because the test charge is coming from infinity, then 1 by infinity students 0 हो जाएगा. 1 by infinity 0 हो जाएगा. So we will get
द वैल्यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसमें क्या हो गया, अगर हमारा टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है, दैट इज इफ R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो अगर टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है कि R1 इज इंफिनिटी, ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू K into capital Q into Q naught into 1 by R2, because 1 by R1 तो 1 by infinity है and 1 by infinity is 0, so we can forget that, then it is only 1 by R2. ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, राइट. इफ द चार्ज इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज K Q naught by R2, where R2 is the distance of the point from the capital Q charge, right. And ये पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या, potential energy basically is nothing but V into small q. You can compare, you can see easily by comparing. आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, KQ by R, यहाँ पे भी देखो KQ by R. तो अगर KQ by R को small q से मल्टीप्लाई किया, we get potential energy, right. So to summarize, we can say that अगर हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे फील्ड के अंदर, तो उस टेस्ट चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा. That work done is called as potential energy. And अगर हमने इस potential energy को, इस work done को टेस्ट चार्ज के वैल्यू से डिवाइड किया, then it becomes the work done to bring a unit test charge. One test charge को लाने के लिए work done हो जाएगा, and that is nothing but potential. That is nothing but potential. Thank you, dear students. With this, we can stop today's session. Make sure that you are sharing, subscribing and liking the video. Please make sure that you share it with as much as students as you can. Keep on learning physics. Keep on enjoying physics. Thank you very much.